So today, as I said, we are going to talk about the demonstrative pronoun and the interrogative pronoun. So let's begin with demonstrative pronoun. So now, what is demonstrative pronoun? आप लोग में बहुत दिन पूछेंगे कि demonstrative pronoun क्या होता है, demonstrative pronoun क्या होता है. Demonstrative pronoun refers to the object or the object which it refers to. Okay, a pronoun is used to point out the object. Suppose I'm saying, these are my books. They point out, the pronouns that point out the object which it refers to. जो प्रोनाउन कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, अ प्रोनाउन that is used to point out, आप लोग लिख सकते हो, you all can copy it down, the object or objects which it refers to. So those are called demonstrative pronoun. उसको हम लोग demonstrative pronoun बोलते हैं. ओके, नाउ अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल के तौर में हम लोग अगर लिखते हैं, this is a mango tree. These are mango trees. Okay, that is a beautiful flower. Those are beautiful flower. आप लोग सब अभी सोच ही रहे होंगे कि मैम ये बोर्ड में इतना क्या लिखती जा रही है, समझा नहीं रही, बस बोलती जा रही है, लिखती जा रही है. So now I'll just give the explanation over here. So over here, the word that I use, you see over here I've used this, these, that, those. Now the words this, these, that and those, these words are demonstrative pronoun. The word this and that are used in singular sense, and word these and those are used for plural forms. This is a mango tree. हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, we are pointing it somewhere कि this, ये वाला पेड़ मैंगो ट्री है. So this refers to the mango tree. So this pronoun refers to what? Refers to the object it is pointing out, that is the mango tree. These, वो सब mango tree है. These are mango trees. That flower, वो वाला फूल बहुत सुंदर है. That flower is very beautiful. Now in the next, those flowers are very beautiful. वो सब flowers इतना beautiful है. So ये सब हो गया क्या हम लोग का demonstrative pronoun. These are that I'm using over here are demonstrative pronoun. Okay, so in demonstrative pronoun we normally use these words, this, these, that, those. Okay, now another question may crop up, that if you all have watched my video on adjectives, isn't it? There was in the adjective also, there we had learnt about demonstrative adjective. अब in demonstrative adjective में भी हम लोग पढ़े थे क्या? These, that, these, those. Now comes the point over here. आप लोग पूछ सकते हो कि कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा demonstrative pronoun है, कौन सा demonstrative adjective है. I'll tell you about this now.
Okay, so now we will learn about which is demonstrative pronoun and which is demonstrative adjective. Now students, if you remember adjectives, can you tell me what is adjective? What have we learned in other classes of adjective? You can write down in the comment box, surely. Adjective is that which is used before a noun, that describes a noun. एडजेक्टिव हम लोग किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव वो होता है जो हम लोग नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है, वो होता है एडजेक्टिव. सपोज इफ आई से द लीफ इज ग्रीन, सो लीफ कैसा है? लीफ इज ग्रीन, इट इज अ ग्रीन लीफ, सो ये हो गया ग्रीन लीफ. इट इज अ राइप मैंगो, आम पका हुआ है, राइप एडजेक्टिव. राम इज अ गुड बॉय, कैसा लड़का है? गुड. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. एंड इन केस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव व्हाट वी विल राइट? दीज आर माई बुक्स, या तो दिस बुक्स आर माइन, दिस बुक्स आर माइन, ये बुक मेरा है. सो हम लोग बुक्स के पहले दीज यूज कर रहे हैं, नाउन के पहले. एडजेक्टिव always keep in mind, adjective is used before a noun. adjective हमेशा noun से पहले आता है. now come up to pronoun. हम लोग pronoun में क्या सीखे हैं? pronoun noun के बदले में यूज होता है. noun और pronoun दोनों साथ में कभी नहीं जा सकता. we can never use noun and pronoun together. we use pronoun in place of noun. So here lies the difference of adjective and pronoun. Same as over here in demonstrative adjective and pronoun. Just see, if I write the sentence as this is my book, and over here I write that this book is mine. What are the difference? Can you note down the difference over here? Over here you see, in this case this stands for the noun book. book के लिए, book noun है, ये book के लिए हम लोग this यूज कर रहे हैं यहाँ पे. So this is coming under pronoun. हम लोग book के बदले instead of book we are using this. This is my book. This is my book. Okay, but in this case you see, this book is mine. हम लोग book से just पहले placed before the noun. Adjective is placed before the noun. This book is mine. ये बुक मेरा है. सो बोथ दोनों में ही ये बुक मेरा है बोल रहे हैं. बट see the placement of the word this, where it is placed. In case of adjective, the word this is placed just before the noun. Okay, so and in the case of pronoun, the word this is placed much before this, not just before. The noun is placed much after the pronoun. So in this case we use, it is called demonstrative pronoun. Okay, जहां पे हम लोग just pronoun से पहले, noun से पहले अगर pronoun यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे noun से पहले हम लोग ये word यूज किए हैं, तो ये हो गया adjective. क्योंकि adjective कहाँ बैठता है? adjective noun के just पहले बैठता है, just आगे, just before the noun we use the adjective. Okay, so in this case यहाँ पे हमने noun से पहले बैठाया है, so this is in demonstrative adjective. अब अगर यही चीज को हम लोग थोड़ा वर्ड थोड़ा अदल बदल कर देते हैं, दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस जो यूज हुआ ये बुक के लिए यूज हुआ है. वी आर यूजिंग दिस वर्ड दिस टू पॉइंट आउट दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम लोग यूज किए, तो इस केस में ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका, क्योंकि ये जस्ट नाउन से पहले नहीं है, नाउन से बहुत ही पहले यूज हुआ है. नाउन के जस्ट पहले अगर यूज होता तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता. जस्ट हैव दिस क्लियर कंसेप्ट, इतना आप ध्यान में रख लो. जस्ट इतना ध्यान में रख लो कि वी शुड रिमेंबर दैट
Adjective is usually placed just before the noun. Adjective, you can note it down. Adjective is placed just before the noun. Okay. In the noun it qualifies. But a pronoun, it replaces a noun. A pronoun replaces a noun. A pronoun noun के बदले में यूज होता है और adjective noun के पास, noun के साथ यूज होता है, just पास में, before the noun. Okay, so here lies the difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Now, if I give you one more example, these are my socks. These socks are mine. Same यहाँ पे भी, same case over here. You get to know, just identify. See, I'm writing these before the socks, much before. Not this word this, these. This qualifies this noun. Okay, this is used much before the noun. So in this case, it is a demonstrative pronoun, and we are writing this just to describe this noun socks. So we are just writing it before the noun socks. This is a demonstrative adjective. Now I'll give you a sentence. I'll give you a sentence just to test that if you had got a good knowledge about demonstrative pronoun and demonstrative adjective, just identify the pronoun. Is it a demonstrative pronoun or an adjective? Okay. So suppose if I give the question, can you solve these riddles? So over here, how many of you can say, anyone giving the answer in the comment box? I'll just check it down. If you have got a clear understanding of this, if the concept is clear to you. So what is this? यहाँ पे क्या use हुआ है? Demonstrative pronoun कि demonstrative adjective क्या use किए हम लोग? Just note down the position of the word these. कहाँ पे लगा है? Anyone? Yes? I'll give it the answer. See, the riddles is the noun over here. So हम लोग noun से just पहले इसको use किए हैं. We are using it just before the noun. We are just qualifying the noun, describing the riddle. कौन सा riddle? ये वाला, these riddles. So in this case, this is a demonstrative adjective. Clear? I hope now the concept is clear about demonstrative pronoun and difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective. If you have liked the video, then please share it with your friends and do write it down in the comment section. Any query you need worksheets for this, I'll provide you. I'll provide you for it. So make your concept clear so that never you get a problem, and just note down this small points that I said so that it becomes clear to you whenever you do some worksheet. Regular practice. You know, grammar needs a regular practice, isn't it? Now, with this, we complete our demonstrative pronoun part. Now, we will go on to our next one, that is the interrogative pronoun. So, now we will talk about interrogative pronoun. So in adjective, we have learned about interrogative adjective also. So I'll let you know the difference between them also. The same is over here. Now interrogative pronoun, as you know, interrogate means to ask question. So the words that are used for asking questions, they are called interrogative words. In the same way, this pronoun uses questions. The word that is used for asking questions. Interrogative pronouns asks questions, is used to ask questions. Okay. Pronouns used to
ask a question. That is interrogative pronoun. Okay, example we can give what, when, where, how. These are the interrogative words we used. Interrogative क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना. हम लोग ये एडजेक्टिव्स में भी कहिए हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब होता है कोई एडजेक्टिव जिसमें सवाल पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो रहता है वो सवाल पूछता है. इट आस्क्स अ क्वेश्चन. एनी वर्ड दैट आस्क्स अ क्वेश्चन दैट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ओके, नाउ we can give examples बहुत सारे. what is your name, where do you live, how are you, when are you coming back. So these all are interrogative pronoun sentences. We are asking questions over here. Now let's join to the new part, start the new part that is very important, the difference between interrogative pronoun and interrogative adjective. Okay, I'll just again write it down in the same way as I wrote in the adjective, I think in demonstrative one. Interrogative pronoun and interrogative adjective. Interrogate. I'll not make the video too long for you all. Adjective. Okay, so now interrogative pronoun, again the same thing. Words like what, which can be used both as interrogative pronoun and interrogative adjectives. Okay, suppose when we are using the sentence over here, what is your plan? The question, look at the question, what is your plan? In this case, this is an interrogative pronoun. Plan over here, what over here. Plan is the noun, we are using far from that what. Now if I write, suppose the sentence, what plan do you have? This is an adjective. Why? Because we are using this word just before this plan, before the noun. Adjective describes a noun. So it refers to what? Refers to this plan. So this is the interrogative adjective. Same thing. जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव समझे, सेम चीज यहाँ पे देखिए, व्हाट इज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या है. यहाँ पे भी तुम्हारा प्लान क्या है, बट प्लान के सामने हम लोग व्हाट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्लान से थोड़ी दूरी बना के हम लोग व्हाट लिखे हैं. द वर्ड व्हेन इट इज यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन, जब ये वर्ड जस्ट नाउन के सामने यूज कर रहे हैं तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव हम लोग का. और जब हम लोग थोड़ा नाउन से दूरी बना के रख रहे हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन साथ में नहीं चल सकता, तब ये बन जाएगा हम लोग का क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Okay, now which suppose if I give a sentence like this, is the mail train, which is the mail train. So mail train के बदले हम लोग which यूज किए हैं. Okay, now if I write which train is late, यहाँ पे हम लोग which कहाँ यूज कर रहे हैं? जस्ट ट्रेन से पहले. ओके, क्लियर हो गया ना? सब क्लियर, समझ गया ना कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोल रहे हैं, कौन सा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं. जब हम लोग जस्ट नाउन से पहले जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बना देंगे क्या? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. और जब नाउन से हम लोग बहुत पहले यूज कर रहे हैं वो बन जाएगा हम लोग को इंटरोगेटिव प्रोनाउन. क्लियर? आज का वीडियो यही तक रहेगा. आप लोग को क्लियर कंसेप्ट हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में. एंड प्लीज अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक क्लिक कीजिए एंड गेट ऑन टू दैट वीडियो. पहले उसको देख लीजिए अच्छे से, then you can have a good concept about this interrogative adjective and demonstrative adjective. Okay, please do press the bell icon, you get notified when my next video comes up about the next two adjectives.
Okay, for then, bye bye, have a good day and keep learning with me.